नमस्कार, सुस्वागतम. बृहन्मुंबई पोलीस दल वार्षिक प्रशासकीय अहवाल 2021 अनावरण कार्यक्रमास उपस्थित सन्माननीय पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई श्रीमान हेमंत नगराळे साहेब, मंचावर उपस्थित सन्माननीय पोलीस आयुक्त साहेब, मंचासमोरील सर्व सन्माननीय अपर पोलीस आयुक्त साहेब, सन्माननीय पोलीस उपायुक्त साहेब, मॅडम, उपस्थित सर्व सन्माननीय पत्रकार बंधू भगिनी आणि आपल्या सर्वांचं मी संतोष कालापाड मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि या स्वागतानंतर मी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्याची विनंती करतो सन्माननीय पोलीस आयुक्त गुन्हे श्री भारांबे सरांना. नमस्कार. आजच्या वार्षिक पत्रकार परिषदेनिमित्त सीपी मुंबई सरांच्या वतीने मी सर्व पत्रकार बंधू भगिनींचं स्वागत करतो. माझे सहकारी अधिकारी सुद्धा त्यांचे स्वागत करतो. 2021 हे मुंबई पोलीस दलाकरता खूपच हॅपनिंग वर्ष राहिलेलं आहे. सातत्याने कोविडच्या दरम्यान बाकीच्या अनेक घडामोडी पूर्ण वर्षभर सुरू होत्या. ह्या सर्व घडामोडींचा, गुन्हे सांख्यिकींचा मुंबई पोलीस दलामध्ये तसे मुख्य 5 व्हर्टिकल्स आहेत. लॉ अँड ऑर्डर, क्राईम, ईओडब्ल्यू, ट्रॅफिक आणि ऍडमिन. या सर्व व्हर्टिकल्स मध्ये पूर्ण 2021 साली काय काय घडामोडी घडल्या त्याचं सांख्यिकी आणि त्याचं विश्लेषण या ठिकाणी माननीय पोलीस आयुक्त सर करणार आहेत. त्यासोबतच एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अहवालाचं पण त्यानंतर अनावरण होईल आणि त्यानंतर आपले जे काही प्रश्न असतील आहेत त्यांना मंच सीपी सर त्यांचं समाधान करतील आहेत. दॅट विल बी फॉलोड बाय लंच. ही आजच्या कार्यक्रमाची थोडक्यात रूपरेषा असेल आहे. अधिक वेळ न घालवता मी सीपी सरांना विनंती करतो की पूर्ण वर्षभरामध्ये वेगवेगळ्या व्हर्टिकल्स मध्ये पूर्ण मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये जे काही नवीन उपक्रम सुरू झालेले आहेत, गुन्हे सांख्यिकी आणि इतर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह गोष्टींचा एक सादरीकरण या ठिकाणी करावं. धन्यवाद. तुमच्या परवानगीने मास्क काढतोय. नमस्कार सर्व पत्रकार मंडळींनो, बंधू भगिनींनो. आपली मागील प्रेस कॉन्फरन्स आझाद मैदान मध्ये झाली होती आणि त्यामध्ये मी आपल्याला कबूल केलं होतं की एक वार्षिक प्रेस कॉन्फरन्स आपण करू, ज्याच्यामध्ये पूर्ण वर्षामध्ये आपण केलेली कामगिरी, गुन्ह्याचा आढावा आणि बाकी प्रशासकीय योजना, इतर बाबी या सगळ्यांचा त्याच्यामध्ये उहापोह राहील. तर त्या अनुषंगाने आज आपण ही वार्षिक प्रेस कॉन्फरन्स घेत आहोत. आता जॉईंट सीपी क्राईमने सांगितलं त्याप्रमाणे आपण पूर्ण 2021 मध्ये संपूर्ण कालावधीमध्ये वर्षभराच्या जे गुन्हे घडले त्यात सेन्सेशनल क्राईम, महत्वाचे मोठे गुन्हे, ड्रग्ज मधल्या जप्ती या सगळ्या विषयांवर एकत्रितपणे आढावा घेणार आहोत.
याचं मी प्रेझेंटेशन आपल्यासाठी एक तयार केलेलं आहे आणि या वर्षीच्या टार्गेट्स मध्ये आणि डिटेल विश्लेषणामध्ये आम्ही सायबर क्राईम आणि क्राईम अगेन्स्ट वुमेन या दोन गोष्टींना जास्त भर दिलेला आहे. पोलीस सायंटिकी आपण बघितली तर त्याच्यामध्ये बरेचसे हेड असतात, परंतु यावर वर्षाच्या फोकसमध्ये 2021च्या फोकसमध्ये आपण या दोन सायबर क्राईम आणि महिलांविरोधी अत्याचार या दोन गोष्टींना प्रामुख्य दिले आहे. तर आता आपण प्रेझेंटेशन सुरू करूया आणि प्रेझेंटेशन बरोबर मी तुम्हाला ब्रीफ करत राहीन. साधारण 31 स्लाइड्स आहेत आणि त्याचं प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर मग आपण हा जो वार्षिक अहवाल आहे याचं अनावरण करू आणि तो तुमच्यापैकी काही लोकांनाही त्याच्या कॉपीज देण्यात येतील आणि सगळ्यांनाच ऑनलाईन कॉपी सगळ्यांनाच पाठवण्यात येईल. आय होप यू आर रेडी विथ दॅट. तर आपण आपलं प्रेझेंटेशन सुरू करू. स्लाइड. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपल्या कमिशनरेट मध्ये जी हिरार्की स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये सीपीच्या अंडर मध्ये जॉईंट सीपी क्राईम, ऍडिशनल सीपी, जॉईंट सीपी सगळे, ऍडिशनल सीपी, डीसीपी, त्यामध्ये ब्रांचेसचे वेगळे, झोनचे वेगळे, हे सगळे असे आपल्याकडे ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आहे. हे फक्त तुमच्या अतिरिक्त माहितीसाठी आहे. नेक्स्ट. यात महत्वाचा मुद्दा की आपल्याकडे टोटल सँक्शन पोस्ट 46,212 आहेत आणि सध्या वर्किंग स्टाफ 37,465 आहे. यामध्ये मुख्य कारण ज्या वॅकन्सी आहेत आपल्या 8,747च्या, याचं मुख्य कारण 2018-19-20 या 3 वर्षांमध्ये विविध कारणांमुळे आपली भरती होऊ शकली नाही, हे प्रामुख्याने त्याचं कारण आहे. आता जी आपण एक भरती 1076 ची पूर्ण केली ती 2018 ची भरती होती, तर तिची प्रक्रिया मध्ये खोळंबली होती, परंतु आता आपण ती यशस्वीपणे केलेली आहे. नेक्स्ट. या स्लाइड मध्ये आपल्याला दिसत असेल ओव्हरऑल क्राईम कंपॅरिझन 2021 मध्ये टोटल याच्यामध्ये तुमच्या 188च्या ज्या केसेस असतात त्या सुद्धा पकडून या केसेस 64,656 एवढ्या केसेस रजिस्टर्स आहेत आणि या 2020 मध्ये ज्या 51,068 होत्या त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये जरा जास्त आहेत आणि 2021 मध्ये या 41,931 होत्या 2019 मध्ये. आता ही जी वाढ आहे ही मुख्यतः ज्या 188च्या केसेस आहेत याच्यामुळे ही मुख्य वाढ आहे. आता 188च्या केसेस मध्ये म्हणजे आपला मागच्या 2020 आणि 21 मध्ये जे कोरोनासाठी आपण जे सेक्शन 144 इम्प्लिमेंट करतो आणि त्याचा भंग झाला की आपण त्याच्या केसेस दाखल करतो, त्या 188 आयपीसी खाली या केसेस जातात. तर याच्या
वरून आपल्याला असं दिसून येईल की कोरोनाच्या काळामध्ये, लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपण भरपूर केसेस 188च्या केलेल्या आहेत. डिटेक्शन बघता 2021 मध्ये 82% डिटेक्शन आहे as compared to 79% in 20 and 69% in 2019. Next please. Without IPC च्या केसेस, नाही मागची स्लाइड, विदाउट आयपीसी च्या केसेस या 2021 मध्ये 33,813 आहेत, which is higher as compared to 28,244 cases in 2020. And compared with 2019, 41,590 cases without IPC 188, they have decreased by 7,777 in 2021. Next. This is analysis of various heads and it shows the detection percentage compared to 2020. All the heads are showing increased registration in 2021, but in 2020 the COVID-19 pandemic may have affected the crime registration. Next slide. In this slide, theft cases, motor vehicle theft, hurt cases are at the top heads with higher percentage share of the overall crime in the city. Dacoity has 100% detection. And out of 162 murder cases, 2 cases are undetected. Next. You can see the body offences cases comparative study. Body offences includes murder, attempt to murder, hurt, rape, molestation, eve teasing, 304 death by negligence, kidnapping, dowry death, abatement of suicide, 498 cases, 377, 370 culpable homicide not amounting to murder, 313 to 318 IPC cases, attempt to commit suicide, 341 to 348 cases. All these cases are offences against the body. So in overall body offences in 2021, the total cases are 9,740, which is decreased by 2,219 when compared to 2019 figure, which were 12,030 cases. But when compared to 2020, which is 9,548 cases have increased by 192. Detection of these body offences cases is 90%, which was 88% in 2019 and 83% in 2020. Next. In the analysis of the property of crimes, property offences which include dacoity, robbery, housebreaking thefts and motor vehicle thefts. In 2021, 10,413 cases were registered of property crime, which have been reduced by 1391 when we compare the figures of 2019, which is 11,804 cases, but the cases have increased by 1,767 in comparison to 2020 cases.
Detection in 2021 is at 50%, which is higher than 45% in 2019 and 43% in 2020. In 2021, the recovered property is at 43% overall, which is higher than 34% in 2019 and 33% in 2020. This is due to the special effort made by our investigation officers at police stations and crime branch level. Next. Now we will deal with crime against women in 2019, 20 and 21. The crime against women, which includes rapes, kidnapping, molestation, euphemism, harassment under 498A, murders, suicide, mental and physical harassment due to other reasons. Overall crime against women in 2021 has decreased by 942 when compared to 2019. But when compared to 2020, the cases have increased by 957. The overall detection rate of crime against women in 2021 is 79%. It has decreased a little bit, which was 83% in 2019. Most of the undetected cases are of mutual consent and live-in relationship or marriage proposals which are not fulfilled. When compared to 2022, the detection rate has increased. In 2020, it was 77%. Next. Going ahead with crime against women, under respective heads, in 2021, rape, kidnapping, molestation, euphemism, murder, and mental and physical harassment cases have decreased compared to 2019. In 2019, 20 and 21, the percentage share of molestation cases is the highest in crime against women. Next. In rape cases, comparison 2021 rape cases against measure, there was 364, which has been reduced when compared to 2019, which was 393 cases, but cases have increased in comparison with 2020, which is 321 cases. Rape against minor, the detection has increased in 2021, which is 98%, as compared to 2019, which is 96%, and 2020, which is 94%. In 2021, major rape cases 364 have been reduced when compared to 2019 of 393 cases, but have increased in comparison with 2020, which was 321 cases. Detection of major rape cases increased in 2021 to 77% when compared to 2020, which was 74%. Next. Rape case analysis and offender's relationship with the victim was analyzed, and the figures are before you. Friends and social media friends, and on pretext or promise to marry the victim, this category has the highest number of accused as compared to other categories in the year 2019, 20 and 21.
other known accused in 2019, 20 and 21, this category has the second highest number of accused. And minor rape cases committed by neighbors are down in 2021 compared to 2019. The number of rape cases by unknown accused in major as well as minor rape cases have decreased in 2021 compared to 2019. Next. In the analysis of the crime against women, that is under POCSO Act, overall POCSO cases in 2021 are 1051 and have decreased when compared to 2019 cases of 1308 cases. But when compared to 2020, which was 932 cases, the cases have increased. Detection rate in rape with POCSO cases in 2021 is 98%, which has increased as compared to 2019, which was 96%, and 2020, which was 94%. Molestation with POCSO in 2021 is 452 cases, which has decreased by 157 cases as compared to 2019 and increased by 24 as compared to 2020. Next. When we compare this region-wise, you can see the West region is the most affected region with 120 cases and the lowest detection rate of 66%. The top figures are the detection rate, which is shown at the top of the bar. And rape of minor, North region is the most affected region with 150 cases. Out of this, 4 cases are still undetected. Next. When we compare molestation in the regions, West region is the most affected region with 520 cases and lowest detection rate of 76%. And molestation of minors, the North region is the most affected region with 151 cases and lowest detection rate of 81%. Next. Now let us move over to analysis of preventive actions. As you all know that preventive actions play a very important role in controlling the crime by the habitual offenders and controlling the known criminals. Of course, here we have included MCOCA also in preventive action wing, though it actually is not a preventive action, it is an offense. MCOCA is offense. But to make a case in MCOCA, it is a very big deterrence for the criminals. So we are taking it as one of the preventive action to control the criminals who are indulging into Gundaism and organized crime for pecuniary gain. When we see MCOCA cases in 2021, total 28 MCOCA cases are registered, which is higher as compared to 2020 when 13 cases were registered and 2019 when 17 cases were registered. Under MPDA, that is Preventive Detention Act, 27 proposals were sanctioned in 2021, which is high as compared to the sanctioned 7 sanctioned proposals in 2020, but comparatively less when compared to 2019 with 30 sanctioned proposals.
Then there are various Mumbai Police Act preventive actions under 55, 56, 57, where normally in 2021 there has been an increasing trend of all these actions that can be seen in the chart. CRPC 151 provision, there is also increase, is reflected in the chart. Under preventive actions of 107, 108, 109 and 110, those also can be seen. In 107, there is a decrease by 2,907 cases compared to 2019, but there is an increase by 2,651 as compared to 2020. In 108, the cases have decreased by 60 as compared to 2019, but increased by 23 in comparison to 2020. Under 109 CRPC, preventive actions are decreased by 411 and 68 compared to 2019 and 2020 respectively. In 2010, in CRPC 110, preventive action are increased by 579 and 1707 as compared to 2019 and 2020. Arresting the absconder and the wanted criminals is an important aspect. So in 2021, 125 absconders were arrested, which is higher than 102 in 2020, but less compared to 428 in 2019. Total 4,255 absconders are still to be arrested. In case of wanted arrest, in 2021, 1,282 wanted were arrested, which is higher than 1,038 in 2020. Then there is an important head of firearm seizure. In 2021, 109 firearms were seized, and this seizure has increased by 22 as compared to 2020, when 189 firearms were seized, but it has decreased by 80 in 2019, when 87 firearms were seized. Next. As you know, there is an enforcement branch which works for the enforcement of the various special acts like PITA, gambling, bar establishment, and other hotels and pub bars and all these things. So in 2021, the gambling and pub and hookah parlor rates have increased in comparison with 2019 and 2020. PITA and bar establishment rates are decreased in comparison with 2019. Next. Now we will come down to cybercrime. Cyber cases in 2021 have increased by 365 when compared to 2019, and when compared with 2020,
the cases have increased by 448. Detection in cyber cases in 2021 is 16%, which has increased by 2% when compared with 2019, when it was 14%, and in 2020 it was 9%. As you are aware that initially there was only one cyber police station operating at BKC, and now we have total 5 cyber police stations, one in each region of Mumbai city. So total 5 cyber police stations are working now, and they are all coming under crime branch and DCP cybercrime. Detection rate in regional cyber police station is 59%, which is better than 13% detection rate of regular police station. Though police stations are handling the matters of cyber crime but of less value, major cases or bigger cases, they go to cyber police station, and there is a unit of cyber cell in each police station. So we are in the process of developing these units and training the officers and men for detection of more cyber crime cases, and crime branch is taking that initiative to train our police station staff officers also. There are few reasons for low detection rate of the cyber crime, like cyber crime is a faceless crime. Servers which are used for cyber crime are mostly located out of India. Social media intermediaries are not responsive in time-bound manner. Intermediaries ask for mutual legal assistance treaty and interrogatory procedures, which is time-consuming procedure. Cyber fraudster commits crime by use of VPN, Tor browsers, masking techniques so difficult to identify them. Cyber fraudsters are mostly located out of Maharashtra, and few prominent places which have emerged in recent time: Jharkhand, West Bengal, Bihar, Rajasthan, which are densely populated area. So it's very difficult to trace out the culprits. The investigation officers at local police stations need to be trained in cyber investigations. Next. The kidnapping and missing persons statistical report of 2014 to 21. From 2014 to 21, total 76,467 victims were traced out of 86,349 missing cases, missing or kidnapping. Total 4,465 kidnapped boys were traced out of 4,786 cases. Total 8,596 kidnapped girls were traced out of 9,124. Total 30,308 missing men were traced out of 35,064. Total 33,098 missing women were traced out of 37,375. When we say this, there are few reasons also for the untraced victims. And amongst the important reasons,
fleeing away after marriage without parents' consent, fleeing with paramour to their native places without informing anybody, fleeing away from home until they reach the legal age of marriage. When a missing person returns home, the parents do not notify the police stations. Next. Now we will come to narcotics and psychotropic substances. We are comparing 2019, 20 and 21. In 2021, 4,185 kgs of NDPS property is seized, which is higher when compared to 2019, which was 1,276 kgs, and also the seizure of 2020, which was 1,127 kgs. Under the head of consumption cases, in 2021, total 6,494 cases were registered, which have decreased as compared to 2019 cases, which was 11,684 cases, but has increased when compared to 2020 cases, when it was 3,074 cases. Next. In the seizure of NDPS property, when we compare 3 years, possession cases in 2021 were 595 cases, which has decreased by 139 when compared to 2019. The seized NDPS property in 2021, I think it is repetition. It has got repeated. The value of seized property in 2021, which was 151 crore, has increased by 82.21 crores when compared to 2019, which is 69.19 crores. And when compared with 2020, the cases has increased by 122.57 crores. Next. Moving over to our economic offences wing. As you know, economic offences wing deals with the high value offences, and EOW registers cases of 10 crore and above. Below 10 crore, it is handled by the police stations. In 2021, 62.84 crore was seized in the registered cases, out of which 39.84 crore worth of property has been returned to the complainant and the investors. In 2021, total 30 cases, and under the magistrate order, 26 cases were registered. Next. We are looking at the pending investigations and the disposals of economic offence wing cases. In 2021, 347 cases and 124 preliminary inquiries, they were pending, out of which, this is at the end of 2021, and in the year's time, 255 charge sheets and final reports have been sent. In 2021, 66 preliminary inquiries are converted into regular cases.
Next. From EOW we move on to traffic enforcement. Total 21,81,628 challans were made and more than rupees 56 crores of amount was recovered from the defaulters. Total 8,06,000 cases were made for without helmet actions. Total number of accidents under all heads are reducing each year since the year 2016, which is a very good sign. You can see the number of fatal accident cases. It is going down. 2016 it was 529, 467, 456, 420, 337, 307. And even the number of deaths in 2016 it was 562, which has now come down to 316. So there is a less loss of life in the accidents and the accident itself is reducing. Next we go to our police welfare schemes. Many of you may not be knowing what we do for the police welfare and our constabulary. So these are the broad categories wherein we try to help our constabulary out of the welfare fund, which is collected by various sources of in the form of Umang Show and various other donations and other things. So you can see that in the 2021 total 32,349 constables were benefited to the tune of 4 crore 23 lakh 3,900 rupees. And just to clarify that out of this, the last item 11, which has been started this year only, wherein we have distributed as a Diwali gift vouchers from our own police canteen, where the constable could have bought any grocery item of Diwali for 750 rupees. We have invested a lot in that, and 30,000 people have taken advantage out of that. Next. As I told you earlier that we have recruitment conducted for, that was for 2018, but finally it is over, and now our 1076 constables have passed through various tests and a final list has been prepared. Now only medical is remaining. Medical is remaining. So as soon as the medical will be over, they will be ready to join. As far as the police medals are concerned, you can see total 136 police medals were received by Mumbai police officers and men in the year 2021. And as on today, in the Corona category, we have a martyr list of 126, which was 123 till December, and now in 2000, that is Naveen yachamadhe this only 3 cases were there in the third wave. Total 123 cases were there in the first and the second wave, but third wave we are lucky that is only death of 3 people. Next. This is one important aspect of policing, that whoever are committing any breach of directions or conducting himself in
not becoming an officer's way, then we have the preliminary inquiry, departmental inquiry, and then we punish that constable or officers. So these are the records of punitive action taken against the officers and the men. So in the year 2021, this office, whether it is a division office or zonal DCP and all combined together in Mumbai Police, we have suspended 81 officers. We have given the punishment to 2,437 officers and men. 32 persons we have dismissed from service after conducting a proper departmental inquiry. 33 persons were removed from the service after going through all the necessary legal work, and one person was compulsory retired. So this is a departmental punishment action that has been taken, because if anybody indulges into wrong behavior, he must be punished, so that punishment is not only for his own action, but it also serves as a lesson to others that we must abide by the law and maintain the high integrity and discipline of police force. Next. Training is a part of police culture, and here you are seeing various training sessions, workshops organized by various officers to train their police officers in their jurisdictions. So you can see that total 146 training sessions were held, and 2,180 police officers they have benefited, and 4,360 men they have benefited from this training. Next. So you all know that recently we have launched on 26 January, we have launched our Nirbhaya squad, and it is actively performing in Mumbai city. You can see all the pink vehicles which are moving around for patrolling, and there is a sense of pride, there is a sense of security amongst the women of Mumbai city. As we have told earlier, the squad, Nirbhaya squad, it consists of a vehicle and one lady police officer assisted by 2 female police constables and 2 male constables. So they are moving around in these vehicles, and they are for any help that is required by a lonely girl or a lady or one who is being ill-treated. They can immediately contact them, apart from the regular contact number of the control room, which she can access anytime, 100 and 103. These 2 numbers are there which she can access to. That's all, friends. Thank you. धन्यवाद सर. यानंतर वार्षिक प्रशासकीय अहवालाचं अनावरण सन्माननीय मंचातर्फे होईल. पत्रकार लोकांना summed up information and facts which have been given in detail in this booklet that we are launching now. So
all the detailed statistical information and during the last year's time, whatever all good cases of detection, good cases of narcotic seizure, everything that I think you will be able to access it in this. यानंतर मी सन्माननीय पोलीस आयुक्त सरांना आणि मंचाला विनंती करतो सन्माननीय पोलीस आयुक्त सरांना की वार्षिक प्रशासकीय अहवाल 2021 अनावरण करावं. सर एलईडी बंद करना पाटील साहब. सर 5 एलईडी बंद करा ना. एलईडी बंद करा जरा डिम करून द्या तुम्ही. LED बंद करा. LED बंद करा. खूप लाईट आहे. क्या चाहिए? आ जाइए ना, आ जाइए ना. पीछे आ जाइए. आ जाइए. पीछे पीछे सर थोड़ा सा जवळ आला. आता ओपन करा. पीछे पीछे चल जाओ विशाल. विशाल सर पीछे जवळ आला ना. सर थोड़ा क्लोज है ना. क्लोज है ना. सर तुम्ही थोडं जवळ. हां ठीक आहे. धन्यवाद सर. वार्षिक प्रशासकीय अहवालाचं प्रकाशन झालं असं मी सन्माननीय पोलीस आयुक्त सरांच्या वतीने जाहीर करतो. आणि यानंतर पत्रकार बंधू भगिनींना आपका माइक चालू है, आप कुछ गलत बातें बोल रहे हैं फोन पे. अपना माइक पे वो सुनाई दे रहा है. थोड़ा पीछे केयरफुल. नहीं गलत बातें नहीं कर रहे. बात कर रहे हैं आप. सुना इसलिए मैं बोल रहा हूँ. आपस में बात कर रहे हैं. आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ सुनाई दे रहा है ना. उनका व्हॅलेंटाईन डे आज. ज्या पत्रकार बंधू भगिनींना काही प्रश्न विचारायचे असतील त्यांना आता सन्माननीय पोलीस आयुक्त सरांच्या परवानगीने आपण प्रश्न विचारू शकता. धन्यवाद. PDF कॉपीज ग्रुपवर टाकलेल्या आहेत अॅन्युअल बुकच्या पण आणि प्रेझेंटेशनच्या पण. जर कोणी मेंबर नसेल तर इतरांना फॉरवर्ड करून द्या प्लीज. थँक्यू. सर साइबर केसेस के बारे में पूछना चाहूंगा मैं कि साइबर केसेस अभी बड़े हैं और गुल्लीबाई सुल्ली डील्स वगैरह आप लोगों ने हल किया, क्राइम ब्रांच ने बेहतरीन कार्रवाई की. तो साइबर केस पर जो है काबू पाना और सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है उस पर कैसे काबू पा रही है पुलिस और किस तरह से काम किया जा रहा है आगे? साइबर केसेस को सॉल्व करने के लिए मुंबई पुलिस कटिबद्ध है और हमारी पुरजोर कोशिश चल रही है कि हम क्लिष्ट से क्लिष्ट जो भी जटिल से जटिल साइबर क्राइम हो उसको हम सॉल्व करें. इसका जो डिटेक्शन परसेंटेज आपने देखा है कि डिटेक्शन परसेंटेज ओवरऑल लेस है क्योंकि इसमें अधिकतर फाइनेंशियल क्राइम्स जो है कि मेरे क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए चले गए या 8,000 रुपए चले गए, मैंने OTP शेयर कर दिया, छोटा अमाउंट चला गया. तो ऐसे जो लेस अमाउंट के फाइनेंशियल क्राइम से नॉर्मली वो थोड़े से अनडिटेक्टेड है. लेकिन जो भी चैलेंजिंग केसेस रही है साइबर क्राइम साइबर वर्ल्ड में मुंबई पुलिस के सामने अधिकतर केसेस मुंबई पुलिस ने डिटेक्ट की हुई है. परमवीर सर, इसी में सवाल जोड़ दें कि किस तरीके से मुंबई पुलिस के जो स्टाफ है, पुराने स्टाफ और नए स्टाफ को उनको अपग्रेड करने के लिए मुंबई पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है? यस, मुंबई आपने अभी ट्रेनिंग का सेक्शन भी देखा होगा तो इसमें कंटिन्यूअल अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स जो है साइबर क्राइम के और उनके टूल्स का अपग्रेडेशन भी कर रही है. मुंबई पुलिस अभी नेक्स्ट 2-3 महीने में काफी टूल्स प्रोक्योर कर रही है. ऑलमोस्ट लाइक 20-25 करोड़ के टूल्स प्रोक्योर कर रही है जो एकदम एडवांस टूल्स है टू डील विद साइबर क्राइम एंड साइबर क्रिमिनल्स. हेलो सर,
Sir, just adding to your question, in a lot of cases where like you mentioned, the problem you are facing in terms of cases where 40,000, 50,000 are being lost. A lot of these are happening from other states, which technically is not in your jurisdiction. But so the number of these cases, people losing not huge sums, but 60,000, 70,000, which may be a lot for them. And this problem has been there for a while, where these cases are undetected, but they're happening from other states. So how do you all plan to kind of resolve this issue? 40,000, 50,000 may not be the average. The average would be much lesser than that. The accused may be from outside the state, but victims are from Mumbai, so they are our cases only. The only issue is there is a challenge. The modus operandi used by these cyber criminals, they are using multiple numbers of SIM cards and cheap phones which they throw after use. And there are, CP sir also mentioned, like they are using some advanced technologies of encryption and diversion, because of which it is challenging to identify their IPs and their locations. And then in those villages, you must have seen some a movie made on that. Now there are multiple such villages which have mushroomed across the country, but especially there are certain pockets which we call as cyber hubs, wherein these kind of villages group together, and many of the youngsters are indulging into these kind of crimes. So even after knowing them, tracking that individual who used that SIM card or that handset at that particular time is a challenge in investigation. But we are ready to face that challenge. We have taken up that challenge, and our teams are being trained to deal with these kind of crimes. There may be some lag of time, but the momentum is gaining, and we are picking up those cyber crimes. To add to him, I will say that 40,000, 60,000 is not a less amount by any count. But through this PC, I would like to appeal to the public that as soon as you feel, because you get that feeling that you are being cheated by the constant calls or by constant messages, and in some cases you get the debit messages of the banks. So the first thing that the victim must do, that immediately contact the nearest cyber police station or the control room and inform about it. Because that is a golden hour. 1 hour is the golden hour in which if somebody has hacked into your account, bank account, and withdrew amount, within 1 hour, we will be in a position to stop that transaction and get back the amount. And we have been successful in getting the amount. The amount was not much, 1 lakh, 2 lakhs, something like that. But we have cases wherein we were informed. In some cases, I was personally informed, so I transferred the information to DCP crime, and she intervened, and immediately that amount was recovered. So the first thing public must do is immediately they should inform the concerned police station, control room or cyber police station, so the activity of stopping that further transfer of funds can be initiated and it can be retrieved back. सर यही चीज हिंदी में समझा दीजिए लोगों के लिए कि किस तरीके की आपकी अपील है और कैसा आपका एक्सपीरियंस है साइबर क्राइम को रिलेटेड। इसमें साइबर क्राइम के जो गुने होते हैं उसमें क्रेडिट कार्ड या आपका पिन नंबर यूज करके जो अमाउंट विड्रॉ की जाती है उसका मैसेज आपको मोबाइल पे आता है। तो मेरी सभी आम जनता से ये अपील है कि जब भी आपको ऐसे लगे कि आपका बैंक अकाउंट या आपका क्रेडिट कार्ड हैक हो रहा है तो तुरंत बिना कोई वक्त जाया किए आप तुरंत पुलिस स्टेशन को या कंट्रोल रूम को या साइबर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें
अगर 1 घंटे के अंदर में, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, 1 घंटे के अंदर में आपने ये इंफॉर्मेशन दे दी, तो हो सकता है कि वो जो पैसा आपके अकाउंट से निकला है, डेबिट हुआ है, वो ट्रांसफर में दूसरे कहीं और जगह न जाते हुए उसको हम रोक सकते हैं और वो वापस दिलवा सकते हैं विक्टिम को। हेलो सर। तो लास्ट ईयर का 2021 में इस तरह का तुरंत इंटीमेशन मिलने पे हमने आम आदमियों का 6 करोड़ रुपया बचा लिया है। तो ये तभी पॉसिबल है, 1 घंटे के ऊपर में अगर हो गया तो वो एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर होते जाता है, उसके बाद में उसका ट्रेस निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 1 घंटे के अंदर में, आधे घंटे के अंदर में अगर इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसमें सहूलियत हो जाती है और इमीडिएट एक्शन हो जाती है, बैंक भी रिस्पॉन्ड करते हैं और वो स्टॉप पेमेंट कर देते हैं। Mr. Nagarwala, I just wanted a question about the CCTV installed in camp. I will. मैंने इसके पहले भी बताया, पुलिस स्टेशन में कीजिए या फिर 100 नंबर पे बताइए या फिर साइबर पुलिस स्टेशन में कीजिए। रिस्पेक्टेड सर, एक सवाल था इसी से। एक मिनट, मैडम का सवाल है। साइबर से My जुड़ा हुआ। queries with regards to the CCTV cameras installed across police stations. How many police stations have the CCTV cameras? How many don't? You are speaking about cameras installed inside the police station. Yes, which is what the government has been trying to say. The High Court was today. Actually, the tender is in process and the DGP office will take call to install the cameras across the state. Every police station will have certain number of cameras. Whereas the government under the CCTV Safe City project has installed 5,380 cameras, and second phase of installing 5,530 cameras would be completed soon. So the entire city would be under surveillance. Maybe next 2-3 months, the proposal to make the trenching and laying the cable is in process. Particularly, I wanted to only know about the number of police stations that have the CCTV. That number is with us, so we'll provide that number after the press. Can Mumbai Police confidently say that there are CCTV cameras in all the police stations? Because it's a very old High Court order. Yes. The CCTV cameras with private initiatives have been installed in many police stations. But not all. Not all. There are cameras, but I'll give the number with the police stations, how many police stations, how many cameras, that figures will submit after the press. But sir, is there any specific reason that not all the police stations have cameras? Because in 2019 in Varala we saw a case of police custody, custodial death. So is there any specific reason that despite that incident and a High Court order of 2011, The installing of the CCTV cameras in the police station is mandatory as per the High Court order, whereas the cameras are installed in phases and most of the cameras have become unfortunately obsolete. So the process of tender is being done by DGP office and entire state will be covered very soon because that is in the final stage as far as I know. do we know the timeline for Mumbai, sir? That I'll let you know. Let us move forward. मुंबईमध्ये 94 पोलीस स्टेशन आहेत आणि नवीन 5 सायबर पोलीस स्टेशन आहेत. प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे असणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. हायकोर्टाने ते मॅन्डेटरी केलेलं आहे. अनेक फेज मध्ये हे सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलीस स्टेशन मध्ये लावण्यात आले. अनेक प्रायव्हेट इनिशिएटिव्ह होते आणि गव्हर्नमेंटच्या वतीनं सुद्धा लावण्यात आले. परंतु काही कॅमेरे ऑब्सोलीट झालेली आहेत आणि यात एक टेंडर प्रक्रिया राज्य शासनाच्या स्तरावर सुरू आहे, ज्याची प्रक्रिया डीजीपी ऑफिस मध्ये सुरू आहे. ती फायनल स्टेजला आहे, ज्याच्यामुळे सगळ्या पोलीस स्टेशन मध्ये पूर्ण राज्यातल्या सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत आणि ते टेंडर अंतिम अवस्थेत आहे. मुंबई शहरामध्ये 5300 कॅमेरे हे अक्रॉस मेन रोड्स पहिल्या फेज मध्ये लावण्यात आले 2016 साली आणि दुसऱ्या फेज मध्ये 5530 कॅमेरे लावण्याची प्रक्रिया जवळजवळ कंप्लीट झालेली आहे. ट्रेनची परमिशन ही आता नगर विकास खात्याकडे प्रलंबित आहे. एकदा ती परमिशन मिळाली तर हे नवीन 5530 कॅमेरे लावल्यामुळे पूर्ण 10800च्या आसपास कॅमेऱ्यामुळे
मुंबई शहरातला सर्व्हेलन्स अतिशय बलशाली होणार आहे. ऑलरेडी आम्ही 5300 कॅमेऱ्यामुळे गुन्हे डिटेक्ट करणं आणि त्यात प्रिव्हेंटिव्ह डेटरन्स सुद्धा त्यातनं खूप चांगला होत आहे आणि गुन्हे डिटेक्ट करण्यात त्याची मदत होत आहे. आणि या दुसऱ्या फेजमुळे आम्ही आमची ताकद सर्व्हेलन्सच्या दृष्टीने वाढणार. थँक्यू. वाहतूक शाखेचा प्रश्न आहे की आपण टोटल जे चलान आहेत ते केलेलं आहे, रिकव्हरी देखील केलेली आहे. मात्र जर आपण पाहिलं तर अनेक गाड्यांवर सीसीटीव्हीतून वाचण्यासाठी किंवा आपल्या कॅमेऱ्यातून वाचण्यासाठी मागचे नंबर प्लेट किंवा पुढचे नंबर प्लेट लावले जात नाहीत आणि तशा प्रकारचे गाड्या भरपूर प्रमाणात पकडल्या जातात. त्याच्यावर काही कडक कारवाई केली जाते का? आणि अजूनपर्यंत किती पेंडिंग पैसे बाकी आहेत चलानद्वारे यायचे? नेमकं जॉईंट सीपी ट्रॅफिकला बोलवून आलंय दुसऱ्या मीटिंगसाठी, त्याच्यामुळे त्यांना जावं लागलं. तुमचा प्रश्न त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवून देऊ आणि ते डिटेल्स बोलून घेऊ, तुम्हाला ते पुरवण्यात येईल. सर मला एक प्रश्न विचारायचा होता. ऍडिशनल सीपी ट्रॅफिक आहे तुमच्याकडे आहे माहिती अबाउट नो नंबर प्लेट्स? सर विदाउट नंबर प्लेट किंवा ऑल्टर नंबर प्लेटची दररोज सर आमच्याकडे आपण जे मोहीममध्ये दररोज 100 ते 150 कारवाई आम्ही करतो सर. आणि तो डिटेलमध्ये फिगर आपण प्रेसच्या नंतर त्यांना देऊ. सर एक प्रश्न विचारायचा होता. नमस्कार सर, माझं नाव प्रीती तिवारी. बातमीचा आमचा ऑनलाईन पेपर आहे वेबवर आणि वृत्तपत्र रुपेरीवरही आहे. मी क्राईम रिपोर्टर आहे. तर मला एक प्रशासनासंदर्भात एक प्रश्न विचारायचा होता. आता 2-3 दिवस झाले राम मंदिर गोरेगाव त्याच्या बाजूला एक मारुती वॅगनार मध्ये कुजलेलं प्रेत मिळालं. तर त्याच्या संदर्भात म्हणजे ते मुलीचं होतं कोणतरी होतं ते त्याच्या चेहऱ्यावर अधिक किडे पडले होते. व तुमची फुटेज कॅमेराज वगैरे आहेत, मग त्याच्यामध्ये प्रशासनाचं दुर्लक्ष झालं का? कसं काय की ते समजलं कसं नाही की स्टेशनच्या बाजूला असून सुद्धा माहीत पडलं नाही की ते प्रेत तिथे पडलेलं आहे? तर याच्यामध्ये मुलीची बॉडी मिळाली होती, त्याचं स्मेल आल्यानंतर माहिती मिळालेली होती. त्यानंतर आपण जे मध्ये पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पोस्टमॉर्टम केलेला आहे, जे 4 डॉक्टरांची टीम मिळून त्याचं सीसीटीव्ही मध्ये चित्रीकरण केलेलं आहे आणि ती मुलगी कुठे राहते, कुठून आलेली आहे त्याचं सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून शोध घेणं सुरू आहे. पण सर ते त्यांचा प्रश्न हा आहे की ते कुजलेल्या स्थितीत होतं आणि इतके दिवस ते होतं तिथे, तर ते अगोदर का नाही डिटेक्ट झालं हा त्यांचा प्रश्न आहे. तो सांगा सर. बरोबर. याच्यामध्ये त्या ज्या गाड्या होत्या म्हणजे माझी जी माहिती मी त्यावेळेस घेतली त्या फार दिवसापासून तिथे पार्क केलेल्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये ती डेड बॉडी होती असं मला माझ्या प्राथमिक माहितीप्रमाणे जे माझ्यापर्यंत आलं होतं. एनिथिंग डिटेल्स यू वॉन्ट टू से? पण सर इतके दिवस ते होतं म्हणजे तुम्हाला ते अगोदर समजलं कसं नाही की म्हणजे स्टेशनच्या अगदी बाजूलाच होतो आणि तोपर्यंत म्हणजे स्थानिक प्रशासन तिथे त्यांनी दुर्लक्ष केलं का? याला दुर्लक्ष म्हणता येणार नाही. ज्या गाड्या तिथे उभ्या आहेत काही बऱ्याच दिवसापासून त्याच्यामध्ये ही बॉडी मिळालेली होती आणि ती मिळाल्यानंतर ती पुढची कारवाई ती तात्काळ केलेली आहे. सर माझा प्रश्न सर माय क्वेश्चन वाज सर ओके सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि साइबर में सबसे बड़ी तकलीफ मुंबई पुलिस को ये आती है कि जैसे आपने बताया कि झारखंड, बिहार जो डेंसिटी, राजस्थान जैसे जो शहर ये है स्टेट्स है जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड लोग रहते हैं वहाँ पे आरोपियों को पकड़ना मुश्किल होता है, सर्वर्स विदेश में है. तो इस प्रकार से किस प्रकार के आपके ऑब्जर्वेशन रहे हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं इन साइबर ऑफेंसेस को सॉल्व करने में? क्या चाहिए ऐसा किस तरीके के ऑब्स्टेकल्स आपने ऑब्जर्व किए हैं जो आते हैं ऐसे केसेस को सॉल्व? वही तो ऑब्स्टिकल लिस्ट तो आपको बताया ना सर हिंदी में नहीं बताया. साइबर क्राइम डिटेक्शन मुंबई पुलिस बखूबी कर रही है. उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कुछ चैलेंजेस जरूर पुलिस को आती है. वो चैलेंजेस जैसे कुछ जिन सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है साइबर क्राइम करने के लिए वो विदेशों में होने की वजह से उनके इंटरमीडिएरीज और नोडल ऑफिसर्स जो होते हैं वो कई बार
लीगल प्रोसीजर लाइक एमलैट या लेटर रोगेटरी इनका इस्तेमाल करके इस्तेमाल करने का के लिए बोलते हैं, जिसमें काफी अरसा लग जाता है। तो इस वजह से उसकी पेंडेंसी बढ़ जाती है। कई बार जो साइबर क्रिमिनल होता है वो अलग अलग तरीके की मोडस ऑपरेंडाई यूज करता है। इसमें बार बार सिम कार्ड चेंज करना, हैंडसेट चेंज करना, कुछ साइबर जो हॉटस्पॉट्स है, आई वुड से देयर आर सम हॉटस्पॉट्स ऑन द मैप ऑफ द कंट्री, जहाँ पर कुछ पॉकेट्स है कुछ विलेजेस के जिसपे साइबर क्रिमिनल्स की डेंसिटी ज्यादा है, और वहां पर इस तरीके की मोडस ऑपरेंडी यूज करने की वजह से और फ्रीक्वेंटली ये सब चेंज करने की वजह से उस स्पेसिफिक साइबर क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए कुछ दिक्कतें आती है। इसमें का कुछ इलाका नक्सल प्रभावित भी रहता है, या कुछ एकदम डेजर्टेड या हिली एरिया होता है जहां पर अगेन एक्सेस इज अ चैलेंज। और ये सब करते हुए भी मुंबई पुलिस हैज एक्सेप्टेड दिस चैलेंज and we are gearing up, we are training our people to deal with these kind of जो challenges हमारे आती है उसको लेके कैसे डील करना, उसका हम और ट्रेनिंग अपग्रेडेशन कर रहे हैं ताकि हम इससे निपट सकें। सर हेलो सर। Good afternoon. I'm Sonam Saigal from the Hindu. My question is, how many Nirbhaya squads do we have in the city? We have total 94 police stations and 5 cyber police stations. So all the 94 police stations, each police station has one vehicle marked for Nirbhaya squad. And staff from that police station consisting of 1 sub-inspector or APA, lady officers, 2 lady constables and 2 male constables. All in 5 people will be in that vehicle and they will be fitted. And they are working in 2 shifts. Okay. So 24/7 they are available on the road in the police station wherever they are moving around. Right. Have we given them special training for this squad? We have. So my question is, Yeah. Recently NIA has filed an FIR regarding that how D company members are active in Mumbai. How? D company members are active in Mumbai. And on the same, enforcement directorate is also considering and conducting several raids. So how challenging it is now, or how is Mumbai police looking after the same? Because of course, when D company is again being activated, brings a question for the law and order system in Mumbai. I would not like to comment anything when it comes to NIA or any other agencies. I will speak only for Mumbai Police. How is Mumbai police now will Mumbai police initiate any kind of team to maintain such things, because such members are again active in Mumbai? Dawood related offences, the gang and all the 93 blast cases, they were the Dawood related offences are being investigated by CBI mainly, and NIA has also registered some offence which only they can explain better, but it's a generic offence. I guess they have registered, but they can only explain in a better way. This ED action about attachment of some properties belonging to the Dawood gang members, that is already in action, as you can see on the ground. But sir, So Mumbai police is all aware about all these things and activities of different gangs, including Dawood. But the Mumbai police has time and again claimed that how the company related activities are not there in the city anymore. Barely a few incidents here and there, but not that much. So now these So whenever any complaint is received about any activities, whether it is Dawood gang or whether it is any other gang, we are promptly registering offences and investigating. But that registration and investigation of offences, comparative figures, don't show any trend that it is the gang activities are on the rise. They don't give any indication of that sort. So it will not be correct to assume and presume that something is on rise because some offences are getting registered by other agencies. So I think that won't be a logic for that. in that case, ED and
conclusion of as far as green company related activities are concerned? So in the last 1 year, has there been any cases that you have registered in any of those tea gang related issues? We see, if you have gone through the annual report book, you will see some of the cases which we have registered against the gang. Just go through that book also. We have mentioned in that. सर माझा प्रश्न सीपी सरांना आहे. सर मुंबईमध्ये ट्रॅफिक ही नेहमीच एक समस्या राहिलेली आहे. त्याच्यामध्ये वाहनांची संख्या असेल किंवा ज्या कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज मुंबईमध्ये चालू आहेत ते एक रिझन आहे. पण त्याच्यामध्ये आता एक भर पडलेली आहे ती म्हणजे राजकीय आंदोलनाची. एक पार्टी राजकीय आंदोलन करते, मग त्याला काउंटर करायला दुसरी पार्टी समोर येते आणि मग सगळीकडे ट्रॅफिक समस्या होतात आणि मग ते नंतर लोकांना होणाऱ्या त्रासाला बघता आंदोलन मागे घेतलं जातं, पण तो खूप उशीर झालेला असतो. आणि आता बीएमसी इलेक्शन येणार तर असं चुकीचं ठरणार नाही का हे वाढतच जाणार आहे. तर यावरती तुम्ही कसं बघता आणि कसं या समस्येचा तोडगा करता येऊ शकतो? आपल्याकडे ट्रॅफिकची समस्या ही विविध कारणांमुळे आहे. नंबर ऑफ व्हेकल्स खूप जास्त आहेत. नंबर 2, आपल्याकडे रोडची कामं खूप सुरू आहेत, फ्लायओव्हरची कामं सुरू आहेत. नंबर 3, मेट्रो रेलचं काम सुरू आहे. अशा बऱ्याचशा डेव्हलपमेंटच्या ऍक्टिव्हिटीज सुरू आहेत. नॅचरली या डेव्हलपमेंटच्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये रस्त्यांवर ताण येणं साहजिकच आहे आणि थोडासा नागरिकांना त्रास होतोय याची मला पूर्ण जाणीव आहे. परंतु आता त्याच्यामध्ये काही राजकीय पक्ष यांनी आपला जर काही राजकीय कार्यक्रम केला आणि त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये लोक रस्त्यावर आले, आम्ही आमच्या परीने प्रत्येक ठिकाणी जास्त गर्दी होणार नाही हे प्रयत्न आम्ही नेहमीच करत असतो. परंतु तरी काही ठिकाणी कालचा जो इन्सिडेंट झाला ज्याला तुम्ही रेफर करताय, असे कधी कधी होत असतात, परंतु त्यातूनही मार्ग निघत असतात. असं होऊ नये, परंतु कधीतरी होतं असं आणि त्याच्यातून मार्ग काढावा लागतो. परंतु ट्रॅफिक जॅम्स हे डेव्हलपमेंटच्या कारणामुळे फार जास्त आहेत, याच्याबद्दल काही दुमत राहायचं कारण नाही. परंतु डेव्हलपमेंटची कामं तेवढीच महत्वाची आहे आपल्याला, कारण आता नाही केली तर मग कधीतरी तर करायचीच आहेत. मेट्रोचंही काम महत्वाचं आहे, ब्रिजेसचंही काम महत्वाचं आहे, रोडचंही काम महत्वाचं आहे. तर काही ना काही गोष्टी तर होत राहणार आहे. सर आज मुंबई पुलिस की एक पहले जो बात नहीं किए हैं उनको बात कर देते. सर साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ क्राइम कम हुआ है आंकड़ों के हिसाब से. क्या कोरोना की वजह से जो है कम हुआ है या फिर लोग जो है रजिस्टर कराने क्राइम जो है आपके पास नहीं पहुंच पाए? अभी इसके स्पेसिफिक रीजंस तो देना बहुत मुश्किल है वैसे, लेकिन एक बात तो है 2020 में 144 रहने के कारण और संचारबंदी रहने के कारण काफी उसका प्रभाव तो काफी पड़ा है. तो एक फैक्टर तो वो जरूरी है, बट बाकी भी रीजंस हो सकते हैं. अब थोड़ा बहुत बढ़ना या थोड़ा बहुत कम होना, इसमें एक्चुअली कोई भी ऑफेंस में इट इज मोर सोसाइटी रिलेटेड, इट इज नॉट पुलिस रिलेटेड. पुलिस इज ओनली रजिस्टरिंग द केसेस. जो भी कंप्लेंट आती है उसको रजिस्टर करने का है, उसमें पुलिस का ऐसे डायरेक्ट रोल नहीं आता है when it goes up or down. But yes, if the women are less on the roads or they are not coming out on this thing, then mostly because of the corona restrictions, then the streets will be empty and the offences will be coming down. So that corona restrictions could be one of the reasons of that. Sir, बोलिए. Sir, Jayprakash here from Indian Express. कहाँ पे? Sir, here. Sir, Jayprakash here from Indian Express. I have just two questions. One, if you were just talking about cyber crimes,
this particular crime is called wishing, where people call you and impersonate and trick you into sending money. So there is no, this is happening rapidly for the past few years. प्रत्येक दिवस एक केस येतो. So there is no specific data on wishing, like how much cases come, how much cases get registered, how much recovery is made, whether accused get arrested. So if there could be some wishing particular data, it would be really helpful for the reporters as well. No, I think some data will be here in the booklet. Please go through the booklet. It comes under credit card, debit card fraud. Nothing specific to this particular. No, if you have any specific query related to any particular type of thing, you can ask for the information from DCP Cyber. There is no hesitation in giving the information about registration, detection. We will be free to give the information. There is no hesitation. Because these are all, what I have given you, these are all actual figures. Yeah, yes sir, yes sir. So there is never any hesitation from our side to give away the figures, whether it is registration, whether it is detection, whether it is recovery of amount or recovery of funds, anything will be available to you. Only thing, the ongoing investigation, sometimes it is not advisable to reveal the more details to compromise the investigation. So, but once the case is charge sheeted or closed, then we can give the details. And second thing, I want to ask about the Santa Cruz case, whether missing woman was found murdered. So there are several cases where women are run away in missing cases. But after this particular case, where the missing woman was later found murdered, 7 to 8 hours. Sir, any substantive change that has taken place after that particular incident in how we approach the missing cases, how police approaches the missing cases for women especially? For missing women, we have formed a squad, kept a table specially at all the regional control rooms with the lady staff. And we also have a desk in main control room. Now the job of these regional tables and main control room tables dealing with missing only. They will be getting all the information from all the police station in their jurisdiction and tabulating it in the control room, number one. So information related to missing kids, missing women, girls, everybody will be available at the control room. And then there will be follow-up from that desk with the relatives. That whether, because many cases, the girl is stressed out or the boy is stressed out, but the relatives don't inform the police station that they have traced out the boy. Because mostly the girl or a boy, she has gone to relatives' place or some neighbors and then she is found. But that is not informed to the police station. So many a time this information is a result of that call. That is one part. Then we have Missing Person Bureau in the crime branch which takes care of all such cases. So advertisement in the newspaper, advertisement in the television, making publicity about the missing cases, that is regularly done. So we will activate that also on the more positive side. सर नमस्कार, बोलिए। सुनील सिंह एनडीटीवी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आपने कहा कि इस बात के विश्लेषण में महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर क्राइम को ज्यादा महत्व दिया गया है। आंकड़े हमने देखा तो उसमें पता चल रहा है कि 2020 की तुलना में 2021 में दोनों अपराध ज्यादा बढ़े हैं। तो इनका डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए मुंबई पुलिस क्या कर रही है या क्या कर रही है? इसमें कोई भी महिलाओं का, बालकों का जो ऑफेंस रहता है उसका काफी सीरियसली कॉग्निजेंस लिया जाता है। गुना दाखिल करने के अलावा प्रेफरेबली वी सी कि इन्वेस्टिगेशन जो है कोई लेडी ऑफिसर को दे। जैसे साकिना का केस थी, हमने हमारे एक एक्सपीरियंस्ड एसीपी लेडी ऑफिसर है उनको केस दिया और उन्होंने कुछ ही दिनों में उसकी चार्जशीट भी कर दी। तो इस तरह जो सेंसिटिव केसेस है, बच्चों के बारे में है या
लड़कियों के बारे में है, तो उनको प्रायोरिटी पे लेके ये इन्वेस्टिगेशन होता है। और लोकल डीसीपी है, एडिशनल सीपी है, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर है, ये सभी लोग ऑन डेली बेसिस दे गो थ्रू द ऑफेंसेस, दे रिव्यू द केसेस विद द डीसीपीज, विद द सीनियर पीआईज, एंड दे गिव डायरेक्शंस कि कौन सी केस में क्या करना है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, कहाँ पे किसको ट्रेस करने की कोशिश करना है। सो ऑल दीज एफर्ट्स आर मेड and sincere efforts are made, and it is not dealt just casually. इसी से जुड़ा सवाल, निर्भया पत्रक बनने के बाद, हालांकि अभी बहुत हाल ही में बना है, क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं जो बताए जा सके उपलब्धि? इसमें सर उसी में ऐड करना चाहूंगा मैं, सैंटा वाला इंसिडेंट जो अभी जयप्रकाश ने रेफर किया, उसमें मिसिंग कंप्लेंट के लिए फैमिली गई हुई थी पुलिस स्टेशन, पर उनका कंप्लेंट लिया नहीं गया था, 2 दिन बाद के रजिस्टर हुआ है। इसमें बेसिकली क्राइम अगेंस्ट विमेन में अब तक जो रिकॉर्ड हमारे पास क्रिमिनल्स के रहते थे, उसमें रॉबर्स, हाउस ब्रेकर्स, चेन स्नैचर्स, डेकॉइट्स, व्हीकल थीव्स, इनके रहते थे। अभी हमने मॉलेस्टर्स, सेक्सुअल ऑफेंडर्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, रेपिस्ट एंड अदर काइंड ऑफ क्रिमिनल्स हु कमिट क्राइम अगेंस्ट विमेन, इनका डेटा एक साथ किया है। और हमने इसमें बेसिकली प्रिवेंटिव एक्शन अंडर डिफरेंट हेड्स अभी शुरू किया है। खास करके इसमें तड़ीपारी की जो प्रोसेस है, बहुत सारे ऑफेंसेस जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले हैं, उनको तड़ीपार करना मैसिव लेवल पे डीसीपीज ने शुरू किया है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सेकेंडली जो निर्भया स्क्वाड्स बने हैं, सीपी साहब ने अभी गवर्नमेंट को प्रपोज किया है और जल्दी उसमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि जो निर्भया सहायता केंद्र हर एक पुलिस स्टेशन में बन रहा है, उसके लिए स्पेस आइडेंटिफाई किया है। 7 लाख पर पुलिस स्टेशन हमें उस हेड के तहत मिलने वाले हैं, 12 लाख जोनल लेवल पे और 30 लाख रीजनल लेवल पे, जो हम समुपदेशन केंद्र, जो काउंसलिंग सेंटर्स बना रहे हैं, जिसमें 13 ऑलरेडी जोन के हिसाब से महिला बाल कल्याण, टीस और एक एम्पावर करके एनजीओ है, तीनों के कोऑर्डिनेशंस में ये काउंसलिंग, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उनका भी काउंसलिंग किया जाए अलॉन्ग विद द विक्टिम्स ऑफ क्राइम। तो बेसिकली जो डेडिकेटेड टीम है, उनको जो डेडिकेटेड नंबर दिया गया है आईफोन के साथ, उनका अप्रोच अभी ऐसा है कि एनफोर्समेंट के साथ अवेयरनेस और एजुकेशन का भी काम करें। तो खास करके स्लम्स में जहां ज्यादा क्राइम होता है, वहां आउटरीच होने का प्रयत्न शुरू है। खास करके जो लेडीज हॉस्टल्स है, स्कूल्स और कॉलेजेस है, उनमें बेसिक जो प्रिकॉशंस जो लेनी है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है, वॉल की हाइट कुछ बढ़ानी है, कुछ डार्क स्पॉट्स है क्या, उसका पूरे डार्क स्पॉट्स या वल्नरेबल स्पॉट्स का मैपिंग किया है। उसकी तहत क्यूआर कोड सेट करके अभी 50 से 60 क्यूआर कोड हर एक पुलिस स्टेशन में बना के ये निर्भया स्क्वाड है, उनका पेट्रोलिंग का प्लान बनाया गया है। तो वो टाइम और प्लेस के हिसाब से किया है, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। आप अभी निर्भया स्क्वाड्स जो है उनको ट्रेनिंग देके, बेसिक ट्रेनिंग उनको दी है, हाउ टू डील विद द विक्टिम्स, हाउ टू डील विद द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम। उसकी वजह से एक अच्छा माहौल पुलिस स्टेशन लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। Hello sir, Devdutt here from New Indian Express. Sir, I have 2 questions. One is, sir, is there any target detection rate for 2022, including that for cybercrime? Number 1. Sir, you can answer this one. How can I have a target? We can make our best efforts and try to improve what we have been doing. We cannot say I will detect 100% crime. I cannot have that. Of course, that will be a wish which I would like to fulfill, but it cannot be that always. So, the target should be always to better the earlier performance. Yeah, next. Yeah. Sir, so this is regarding control room responses. Sir, a lot of time what happens is the control room it isn't able to send patrol vehicle at the stipulated time. So is there any data for that in so many cases the vehicle has help has arrived in the stipulated time? I think our average reaching time to the spot is 7 minutes. So
if the control room vehicle or the patrolling vehicles are reaching to the spot within 7 minutes, I think that is a pretty good response time. Yes, sir, I understand. But is there any data that out of how many calls, how many? You ask DCP operation, he will provide you all the details. Okay. So anything that is a personal requirement, please approach to the concerned joint CP or concerned DCP. They will give you specific information, and this all data will be tabulated. It is all computerized because every call is recorded and timed. So and everything, even response time also will be there. It is all there. Don't worry, we will give you. I hope we can finish up. सर EOW से थोड़ा सर एक सवाल था सर, उसमें सर अभी रिलीफ किस तरीके से मिल रहा है EOW में, और वहाँ पे क्या कंडीशन है, ट्रेनिंग में किस तरीके से? मेरे को समझा नहीं रिलीफ कौन सा रिलीफ सर EOW के जो केसेस चल रहे हैं अभी फिलहाल, ट्रेंडिंग मींस नहीं EOW के जो केसेस है, बोलते नहीं क्या ना सर EOW से जुड़े जो केसेस हैं अभी फिलहाल कौन से ऐसे केसेस हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और रिलीफ किस तरीके से दिया जा रहा है? रिलीफ 2-3 तरीके का। वो लगता है आपने उनको खाली देखा, इसलिए सवाल पूछने का मूड हो गया। नहीं बहुत सारे केसेस हल किए ना अभी EOW ने, इसीलिए उसमें जो है रिलीफ 2-3 तरह का होता है। एक रिलीफ जो है उसमें जो अक्यूज है, पहला रिलीफ है अगर केस अनडिटेक्टेड है तो उसको डिटेक्ट करना, किसने क्राइम किया है उसको फाइंड आउट करना और उनको न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से उसको उसमें लाना, ये पहला रिलीफ है। दूसरा रिलीफ है जो नुकसान हुआ है वो नुकसान को सिक्योर करना, वो सिक्योर किया जाता है अलग अलग तरह के जो कानून है उनके तहत जो है उसको सिक्योर किया जाता है। प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं NPID एक्ट में, बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं, कैश प्रॉपर्टीज हैं वो सीज की जाती है, घरों की तलाश ली जाती है, डॉक्यूमेंट सिक्योर किए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीकों से जो है ये क्राइम में इन्वॉल्व प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर किया जाता है। ये दूसरी तरह का रिलीफ है। तीसरी तरह का रिलीफ है ऑफेंडर जो है उसको कानून प्रक्रिया में लाना, अगर अरेस्ट की जरूरत है तो उसको अरेस्ट करना, ये तीसरी तरह की रिलीफ है। और चौथी रिलीफ जो है जो नुकसान हुआ है उसकी नुकसान भरपाई विक्टिम को मिलनी चाहिए, ये अंतिम प्रक्रिया है। ये अलग अलग तरीकों से की जाती है, इसमें अलग अलग कानूनी प्रावधान है। ट्रायल के टाइम के एंड के टाइम पे की जाती है, MPID में कोर्ट के मार्फत दी जाती है, तो इसमें अलग अलग कानूनी प्रावधान है। 2021 में हमने 40 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है लगभग वो विक्टिम्स को वापस दिलवाई है। और इस तरह के अलग 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 कोर्ट्स में ये रिलीफ दिलाने का काम चालू है। सर आपने जो बताया था लीग के सामने से उसमें ये कहा गया था कि जो सोशल मीडिया है उस पे तो काफी कंप्लेंट्स पर जो विक्टिम्स है उन्हें सोशल मीडिया पे तो रीच आउट किया जाए, तो क्या ये जो विक्टिम्स है आर दीस यंगर विक्टिम्स? दूसरा क्वेश्चन ये कि ये इंक्रीज दिखाया गया है, ड्रास्टिक इंक्रीज है सोशल मीडिया के वैल्यूज में, उसमें तो क्या ये पोस्ट लॉकडाउन इफेक्ट है? सो दीस आर माय क्वेश्चंस। Can you kindly repeat the first question? सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमने देखा है कि डेटा एनालिसिस में सोशल मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू जो रीच आउट कर रहे हैं, तो क्या ये यंगर विक्टिम्स है जो विक्टिम्स को रीच आउट कर रहे हैं? क्या ये विक्टिम्स कंप्लेंट्स में क्या ये यंगर विक्टिम्स है, मतलब एज कैटेगरी में यंगर विक्टिम्स है? Yeah, most of them are youngsters or like the teenagers, late teenagers or 20s. But some of them are also spinsters and bachelors or separated persons of older age also who get acquainted on the matrimonial sites or otherwise, and then they get intimate and then they get cheated. So these are the kind of analysis. So have these cases increased post lockdown? I mean, because lockdown में
there is a general increase of usage of social media. And every now and then you can see technology is changing. The time you get really acquainted with it and hands-on with that, it has changed. So sometimes it becomes really challenging for some individuals, including good literate people, to cope up with the technology, and that's why they fall prey to this kind. But just add to what she has said, I think what she's asking that during the period of lockdown, because there were several factors. First, some people had more time on hand, and we all were going through a very different mental state. Also, some people were lonely, some people were they were away from their families, so some people were more vulnerable. I would just want I think there is a logic to the thinking, because see, in the lockdown time, many of us could not go out, and same thing happened with the students also, and especially with the schools and colleges being closed down. I think the youngsters spent more time on television and internet, and as a result of that, in a sense of adventure or something, many would have attempted that. So what you say, there is a logic to that it might have given rise to that. But I think we need to conduct some study on that before we will be able to make out a correct statement in that regard. So DCP Crime can go through these figures and compare post-lockdown and before lockdown analysis of these cases with the age-wise group. We will be able to give it more specific on that regard. Thank you. Sir, I have one question, sir. Just last one. Okay, last one. Sir, आपने एक प्रिवेंटिव एक्शन पे बहुत एम्फेसिस दिया था ड्यूटी के दौरान, और आपने कहा था कि प्रिवेंटिव में यूजुअली एमसीओसी अप्लाई करते, लेकिन अब हम ये करने लगे हैं. It is. Sir, let me complete. We have. It is not preventive action का part नहीं है MCOCA. I just wanted to clarify it that MCOCA is an offence. It is not a part of preventive action, but at the same time, when we say that we are applying MCOCA to a case, it creates a ripple in the criminals. And that is how MCOCA acts as a preventive action, because the criminals dread the law and they are fearful of the law. So our purpose is achieved, that more criminals should not be indulging into crime. That is our purpose. So, and that is what is a preventive action. So if we are booking more persons who are fit cases for MCOCA case, so it incapacitates him that way. सर इसी को जुड़ा हुआ मेरा जनरल सवाल था कि मुंबई पुलिस किस तरीके से, मैं डाउटी ब्रांच की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अंडरवर्ल्ड में किस तरीके से काम कर रही है, कैसे आप लोग उन पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज पे मुंबई पुलिस क्या कर रही है अंडरवर्ल्ड के लिए एक जनरल सर. अंडरवर्ल्ड पे जो अपने यहाँ पर गए 2 दशक में जो नून अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स थे, उसमें के कई गैंगस्टर्स तो ऑलरेडी या तो एक्स्ट्राडाइट हो चुके हैं या उनको डिपोर्ट करके इंडिया में आ चुके हैं. हाल ही में आपने देखा होगा एजाज लकड़ावाला, रवि पुजारी, सुरेश पुजारी, ये सब आ गए हैं. और अभी जो हम एनालिसिस करते हैं थ्रेट कॉल्स का, जिनको सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स से जो थ्रेट कॉल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज गैंगस्टर्स आर सिटिंग अब्रॉड. They are mostly not in India. तो उनकी संख्या में भी बहुत गिरावट आई है. And about D gang and all, they have certainly diversified in other branches of financing. Thank you. Okay, thank you. धन्यवाद सर. I just want to add a last sentence that this was a sincere effort from our side to project the facts and the figures of the year. So I had committed to you and I have presented it, and I hope you will give and receive it in a proper perspective and reflect it to the citizens. Thank you. Thank you. धन्यवाद. Kindly join for lunch.
भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे. सर्व पत्रकार बंधू भगिनींसाठी कृपया भोजनाचा आस्वाद घेऊन निघावा. धन्यवाद. जय हिंद. ज्यांना पाहिजे कॉपी